नमस्कार। मैं सुमित गर्ग एक बार पुनः आप सभी का टीम कासा प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। टुडेज टॉपिक इज practical insight on filing appeal under GST Tribunal with live demo, and we have with us our eminent expert and my good friend CA विनोद कौशिक जी। विनोद जी, स्वागत है आपका टीम कासा प्लेटफॉर्म पर वंस अगेन। Thank you, sir. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you, sir. And thanks to all participants for joining in this large number. And definitely, we are going to learn a good knowledge about the GST filing appeal. And if you have any practical problem, difficulties, you can post in the chat box. Apart from this filing of appeal, you have any other query relating to GST, you can post in the chat box. Later on, we will try that Vinod ji can discuss on the other issues as well with regard to queries only. So, once again, welcome. And about Vinod ji, he is a distinguished indirect tax professional with a robust academic and professional background. He is a fellow chartered accountant and a law graduate, hold a bachelor degree as well. This unique set of qualification allow him to analyze tax matters through both financial lens and legal interpretive framework, bridging the gap between the complex accounting data and statutory compliance. He has authored a book on GST amnesty scheme under Section 128A, various articles on GST, Delhi VAT. He has been associated with the various companies in implementation of GST at ground level. So we can say he's having a vast experience. He has delivered many lectures at the various study circles, platforms, Tax Bar Association. So with this, once again, welcome Vinodji. And now I request to take up the technical session. Over to you, sir. Thank you so much, Sumit ji and Team CASA for this wonderful opportunity. And I think it is our first webinar on GST 80. Right. So it is my privilege that I'm doing the first webinar on GST 80. And I'm also thankful to many senior members. I can see there are many members in large number. So I'm thankful to all of you for joining to this webinar. सुबह जी ऑब्जेक्टिव हमारा ये है क्योंकि ये फर्स्ट वेबिनार है एंड मेंबर्स विल स्टार्ट फाइलिंग जीएसटी 80 अपील. So we will try to give a background and also the flavor of the GST 80 portal, because we have created many logins and we have started filing appeals. So I will try to cover up the legal aspects also, wherein many members are getting query on various issues. और उसके बाद हम एक लाइव डेमो कर लेंगे पोर्टल का, क्योंकि प्रोफेशनल्स का भी एक अकाउंट क्रिएट होगा और क्लाइंट का भी एक अकाउंट क्रिएट होगा जीएसटी 80 पोर्टल पे. तो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दी निटी ग्रिटी of the GST portal. So our agenda for the day is that we will start from the origin, then we will cover up latest updates, then we will also discuss the time limits कि time limits क्या हैं अपील फाइल करने की. फिर we will discuss the प्री डिपॉजिट के लिए कितना कितना परसेंट करना है, फर्स्ट स्टेज पे करना है, फिर सेकंड स्टेज पे एडिशनल करना है. फिर उसके बाद कुछ मिस्टेक्स, जो कॉमन मिस्टेक्स विच वी कैन कमिट एट द टाइम ऑफ फाइलिंग जीएसटी 80 अपील्स, तो उनको हम वी विल हैंडल दैट. चेकलिस्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, क्या चेकलिस्ट है जो हम पहले से बना के रखें सो दैट वी कैन फाइल अपील. और उसके बाद फिर हम लाइव डेमो कर लेंगे जीएसटी पोर्टल का. सो मेंबर्स एंड फ्रेंड्स, एडजुडिकेशन के बाद हम फर्स्ट अपील में जाते हैं. जैसे इनकम टैक्स में मैनी मेंबर्स मे बी हैविंग द एक्सपीरियंस. जो फर्स्ट स्टेज है जीएसटी की, उसमें सेक्शन 73 74 का एडजुडिकेशन प्रॉपर ऑफिसर कंक्लूड करता है. और उसके बाद दैट if we are dissatisfied or aggrieved with the order of the proper officer under 73 or 74, there are other sections also, then we can file appeal to the first appellate authority under section 107 of the GST Act. फर्स्ट अपील का अगर ऑर्डर मेरे अगेंस्ट है
तो एक और स्टेज है हाईकोर्ट से पहले, दैट इज ऑफ द ट्राइब्यूनल, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 112 ऑफ द जीएसटी एक्ट। जीएसटी 80 के बाद अगर फिर भी कुछ रह जाता है, कुछ मेरी ग्रीवांसेस हैं, अगर मैं डिससेटिस्फाइड हूं, तो लिमिटेड एस्पेक्ट्स के ऊपर आई कैन गो टू द ऑनरेबल हाई कोर्ट एंड टू द अगेन टू द सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, तो ये तो आया था कोई 1-10 के आसपास के दिखा रहा था मेरे को। फर्स्ट अपील के बाद हाँ। 2017 में जब जीएसटी आया, उसके बाद आज हम 2026 में हैं, अराउंड 8 to 9 years गोन, और अभी तक जीएसटी 80 प्रॉपर तरीके से स्टार्ट नहीं हुआ है। और ये सारा का सारा जो इशू क्रिएट हुआ है, जो डिले हुई है, वो एक लिटिगेशन चल रहा था 2017 से पहले भी। एक प्रोमिनेंट टैक्स बार है मद्रास बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और मद्रास बार एसोसिएशन जो है, उसने ट्राइब्यूनल के रिफॉर्म्स को लेके काफी अच्छे काम किए हैं। गवर्नमेंट का जो ट्राइब्यूनल्स को लेके रवैया था, गवर्नमेंट का जो ट्राइब्यूनल्स को लेके सोच थी, उसमें मद्रास बार एसोसिएशन को काफी सारे इश्यूज नजर आए, चाहे वो ट्राइब्यूनल की इंडिपेंडेंस हो, चाहे वो ट्राइब्यूनल के मेंबर्स का अपॉइंटमेंट हो, चाहे वो ट्राइब्यूनल के मेंबर्स के सैलरी और उनके अदर पर्क्स हों, वो सब एज पर मद्रास बार एसोसिएशन उनमें बायसनेस थी, और वो गवर्नमेंट की तरफ, यानी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रही थी इन दी जुडिशियल प्रोसेस ऑफ ट्राइब्यूनल्स। और उस वजह से देयर वर मेनी केसेस फाइल्ड एट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, एसएलपी फाइल हुई, और उसकी वजह से ये इतना सारा जो डिले है वो हुआ है। लेकिन अब फाइनली हमारे सामने जीएसटी 80 का पोर्टल लाइव हो चुका है, और मेंबर्स ऑलमोस्ट अपॉइंट हो चुके हैं, जुडिशियल मेंबर अपॉइंट हो चुके हैं, और जो सेंटर के टेक्निकल मेंबर हैं उनको अपॉइंटमेंट मिल गई है, उनको बेंच भी एलोकेट कर दिए गए हैं। स्टेट्स के अंदर कुछ कुछ जगह पे, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, तो वहां पर अपॉइंटमेंट जो टेक्निकल मेंबर स्टेट है उनका हो गया है। तो अब हमारे सामने क्या होगा, जब हम जीएसटी 80 पोर्टल के ऊपर जाके अपनी अपील फाइल करेंगे, तो उस अपील की स्क्रूटनी करेगी जो रजिस्ट्री है, और स्क्रूटनी करने के बाद अगर कोई डिफेक्ट होगा मेरी अपील में, तो वो डिफेक्ट हमें कम्युनिकेट किया जाएगा, और डिफेक्ट को जब हम ठीक कर देंगे तो मेरी अपील रजिस्टर्ड हो जाएगी, मुझे एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगी। और उसके बाद जब फिजिकली या फिर हाइब्रिड मोड में जितनी भी बेंचेज हैं रिस्पेक्टिव स्टेट्स में, जब वो फंक्शनल होगी तो मेरी को हियरिंग मिल जाएगी। अगर हम आज की बात करें, तो प्रैक्टिकली जो प्रिंसिपल बेंच है, जिसके जो प्रेसिडेंट हैं रिटायर्ड जज हैं ऑनरेबल संजय कुमार मिश्रा जी, उन्होंने एक डिसीजन एंटी प्रॉफिटियरिंग के अलावा भी अभी दिया था कुछ मिसमैचेस को लेके। तो उनके पास एक बड़ी वास्ट जुरिडिक्शन है कि वो प्रिंसिपल बेंच किसी भी मैटर को सुन सकती है। तो वैसा करते हुए उन्होंने एक मैटर की सुनवाई करी, और वो ऑर्डर आपने सबने सोशल मीडिया पे सर्कुलेट होते हुए देखा भी होगा। लेकिन इन टाइम्स टू कम प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होगा। इन टाइम्स टू कम जो आपकी स्टेट में बेंचेज हैं, वो आपके मैटर्स को सुनेंगी। अगर आपका कोई मैटर रिलेटेड टू प्लेस ऑफ सप्लाई और आईएसडी से कुछ इश्यूज हैं, तो वो प्रिंसिपल बेंच के पास जाएंगे। अदरवाइज नॉर्मल मैटर्स आपके जो आपकी स्टेट बेंच है वो आपकी सुनवाई करेगी। तो सबसे पहला जो कंसर्न है, जो मेंबर्स का डाउट भी हो सकता है, और उनको ये डिफिकल्टी भी हो सकती है समझने में कि प्रैक्टिकली लास्ट डेट्स क्या बन रही हैं। तो मेरी जीएसटी 80 की अपील्स हैं, जो ऑर्डर फर्स्ट अपील ने पास कर दिए हैं, उनकी कोई एक्सट्रीम लास्ट डेट है या नहीं है। आपकी अगर आप स्क्रीन पे देखें, तो सेक्शन 112 है, और वो बात करता है बाय डिफॉल्ट कि आपको विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑन विच द ऑर्डर शॉट टू बी अपील्ड अगेंस्ट दिस कम्युनिकेटेड, आपको उसकी अपील फाइल करनी है। अगर मैं बाय डिफॉल्ट बात करूं, 112 सबसेक्शन 1 बोलता है कि आपको विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्डर अपील फाइल करनी है। लेकिन ट्राइब्यूनल के कॉन्स्टिट्यूट होने में बहुत सारी डिफिकल्टी थी,
इसी वजह से इस सेक्शन में अमेंडमेंट की गई और अमेंडमेंट करके ये कहा गया कि गवर्नमेंट अलग से एक डेट बता सकती है जिस डेट तक आप अपनी अपील फाइल कर सकते हैं। ऐसा करते हुए अभी एक लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन है वो इशू हुई है। और as per this notification dated 17th of September 2025, अगर आपका ऑर्डर इन अपील 31st मार्च या उससे पहले पास हुआ है, we can read this the language also. In exercise of the powers conferred under so and so section of the CGST Act, the government on the recommendation of council hereby notify the 30th day of June 2026 the date up to which appeals may be filed before the appellate tribunal under this act in respect of all cases where the order sought to be appealed against is communicated to the person preferring the appeal before the first day of April 2026. 1 अप्रैल 2026 से पहले अगर आपको कोई भी ऑर्डर इन अपील कम्युनिकेट हुआ है तो you have the last date of filing appeal before GST 80, that is up to 30th of June 2026. Now we are in March. Today is 16th of March 2026. 31st March 2026 तक जितने भी ऑर्डर पास होंगे, उससे पहले भी जितने हुए हैं, 31st मार्च तक भी जितने ऑर्डर पास होंगे, उसकी लास्ट डेट बनेगी 30 जून 2026। उसके बाद 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स आपको 3 महीने का टाइम मिलेगा फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्डर। ये जो 30th ऑफ जून का जो लास्ट डेट है, ये जो पुराने ऑर्डर्स पास हो गए हैं उनके लिए स्पेसिफिकली है। वहां तक आप अपनी अपील फाइल कर सकते हो। तो अभी अपील की प्रिपरेशन आपको शुरू करनी पड़ेगी उन केसेस में जिनके ओआईएस पहले पास हो चुके हैं, वो कभी भी पास हुए हों, 2024 में, 2025 में, जब भी पास हुए हैं, आपको अपनी एक्सट्रीम लास्ट डेट का ध्यान रखना है और 30th ऑफ जून 2026 से पहले पहले अपनी अपील फाइल करा लेनी है। उसके बाद नॉर्मल जो रूटीन है, जो 3 मंथ्स का टाइम है, वो आपको मिलने वाला है। इसी पॉइंट को डिस्कस करते हुए हम इसका एक एक्सटेंशन जो है, एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन इसमें आता है, वो ये है कि 3 महीने का जो टाइम स्टैट्यूट ने दिया है 112 सबसेक्शन 1 में, उसके बाद ट्राइब्यूनल को एडिशनल 3 मंथ्स का टाइम मिलेगा आपकी डिले कंडोन करने का। अगर मैं कमिश्नर अपील की बात करूं, फर्स्ट अपील की बात करूं, तो 3+1 का टाइम नॉर्मली कमिश्नर के पास होता है। 3 मंथ का टाइम मुझे ऑफिशियली मिलता है और 1 मंथ का टाइम कमिश्नर के पास होता है कि अगर रीजनेबल ग्राउंड्स हैं तो ही कैन कंडोन माई डिले अप टू 1 मंथ। 3+1 4 मंथ्स। ट्राइब्यूनल के केस में ये टाइम 3+3 है। 3 मेरा ओरिजिनल टाइम है प्रोवाइडेड बाय स्टैट्यूट, और 3 मंथ्स की जो पावर है वो ट्राइब्यूनल को दी गई है अंडर द स्टैट्यूट कि 3 मंथ्स तक की डिले को कंडोन कर सकते हैं। 3+3 6 मंथ का मेरे पास टाइम है, जिसमें विद इन 3 मंथ्स में मैं ओरिजिनली कर सकता हूं और 3 मंथ्स की मैं कंडोनेशन ऑफ डिले रिक्वेस्ट लाके अपनी अपील, अगर मेरी डिले है तो उसको कंडोन करा सकता हूं। तो फ्रेंड्स, ये था इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस, आपको ध्यान रखनी है। इन टाइम्स टू कम ये डेडलाइन जल्दी आने वाली है। इसके अलावा एक प्रैक्टिकल डिफिकल्टी मेंबर्स के सामने ये आई है कि ऑर्डर इन अपील कई लोगों के इशू हो चुके हैं एंड ड्यू टू सर्टेन रीजंस उन्होंने ना तो अभी अपील फाइल करी है और ना ही उन्होंने कोई इसको स्टे करने के लिए एज पर सर्कुलर नंबर, यू कैन सी सर्कुलर नंबर 224/18/2024, इसके हिसाब से एक जुरिडिक्शनल, जो आपका जुरिडिक्शनल ऑफिस है, वहां पे आपको एक डिक्लेरेशन देनी थी, अंडरटेकिंग देनी थी कि आई एम इंटेंडिंग टू फाइल अपील अगेंस्ट दिस ऑर्डर इन अपील, और आपको जो 10% का प्री डिपॉजिट था वो भी जमा कराना था। 10% का प्री डिपॉजिट करा के आपको वो अंडरटेकिंग अपने जुरिडिक्शनल ऑफिस में फाइल करनी थी। अगर आप ऐसा करते तो आपकी जो डिमांड थी, जो ऑर्डर इन अपील में निकली है, दैट विल गेट स्टेड, वो स्टे हो जाती। लेकिन जिन जिन केसेस में, कई ऐसे केसेस आए हैं कि
एडिशनल 10% का प्री डिपॉजिट नहीं हुआ और डिपार्टमेंट ने रिकवरी स्टार्ट कर दी है। अभी भी अगर आपको लगता है, तो ये मेरा सजेशन है कि अभी भी आपको लगता है कि आपका क्लाइंट डिले करेगा अपील फाइल कराने में ड्यू टू सर्टेन इश्यूज, तो आप ये डिक्लेरेशन जरूर फाइल करें, अंडरटेकिंग जरूर फाइल करें, और जो 10% का प्री डिपॉजिट है उसको करें। जो 10% का एडिशनल प्री डिपॉजिट है, फर्स्ट पे 10 किया, सेकंड पे 10 करना है, उसकी पेमेंट कैसे करनी है उसको लेके काफी डिफिकल्टी और काफी कंफ्यूजन है। तो आई एम ट्राइंग टू क्लैरिफाई दैट ऑल्सो। फ्रेंड्स, अगर आपने नहीं किया है प्री डिपॉजिट एडिशनल 10 का, तो आपको क्या करना है, जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद लॉगिन करने के बाद पेमेंट टुवर्ड्स डिमांड एक ऑप्शन आता है। पेमेंट टुवर्ड्स डिमांड के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करते हैं तो वहां पर आपको डिमांड दिखती है। जो ऑर्डर इन अपील में आपकी डिमांड कंफर्म हुई है, जो ऑर्डर इन अपील में आपकी डिमांड कंफर्म हुई है, उस डिमांड का, जो ऑर्डर इन ओरिजिनल में आपकी डिमांड थी उसका 10% आपने जमा कर दिया। अब अगर हम सपोज करें कि सेम ऑर्डर कंफर्म कर दिया, आप हेल्ड कर दिया ऑर्डर इन अपील ने, तो आपको टैक्स का 10% फिर से जमा करना है। इन माय हम्बल ओपिनियन, आप उसको सेलेक्ट करें, आप उसको सेलेक्ट करें, उस पर्टिकुलर डिमांड को सेलेक्ट करें और 10% एडिशनल वहां पर जमा कर दें। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है प्रोफेशनल्स का कि क्या अगर मैं पेमेंट टुवर्ड्स डिमांड पे एडिशनल 10% पे करूंगा, तो मैं जब अपील फाइल करूंगा जीएसटी एटी पोर्टल पे, तो उसमें कोई डिफिकल्टी तो नहीं आएगी? इन माई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, जब आप जीएसटी एटी पोर्टल पर वो अपील फाइल करेंगे तो कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। द पोर्टल विल ऑटोमेटिकली सेंस दैट एडिशनल 10% पेमेंट और आपको अपील फाइल करने देगा, आपको अपील फाइल करने के लिए नहीं रोकेगा। कि सबसे बेस्ट तरीका है, आप पर्टिकुलर डिमांड पे जाइए, उस डिमांड के अगेंस्ट पेमेंट करिए। अब दूसरी सिचुएशन ये है कि कई लोगों ने डीआरसी 03 से पेमेंट कर दी है। अगर आपने डीआरसी 03 से पेमेंट कर दी है, या फिर आप कभी करते हैं, तो आपको ध्यान ये रखना है कि आप उस पेमेंट को वॉलेंट्री का जो ड्रॉप डाउन है वहां जाके करिए। वॉलेंट्री का जो ड्रॉप डाउन है वहां जाकर करिए, ताकि आपको डीआरसी 03A फाइल करने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। अगर कोई ओपन डीआरसी 03 आपके पास है और आप चाहते हैं कि वो डीआरसी 03 एडजस्ट हो जाए टुवर्ड्स माई प्री डिपॉजिट ऑफ एडिशनल 10%, तो आपको डीआरसी 03A फाइल करना है। जब आप डीआरसी 03A फाइल करते हैं, जब आप डीआरसी 03A फाइल करते हैं, तो वो जो पर्टिकुलर डिमांड है आपकी, वो प्री डिपॉजिट के लिए कंसीडर हो जाएगी। ये लेटेस्ट एक एडवाइजरी है जीएसटी की, उसने भी क्लैरिफाई कर दिया है। ओपन डीआरसी 03 को हम एडजस्ट कर सकते हैं बाय फाइलिंग फॉर्म डीआरसी 03A, एंड दैट डिमांड विल ऑटोमेटिकली गेट एडजस्टेड अगेंस्ट माय प्री डिपॉजिट ऑफ एडिशनल 10%। इसमें कोई भी अब संशय या कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर हम प्री डिपॉजिट की बात करें, तो 10% फर्स्ट लेवल पे होना है, 10% सेकेंड लेवल पे होना है। 10% जो फर्स्ट पे हमने कर दिया, उसके अलावा हमें एडिशनल 10% करना है। 10 + 10 टोटल 20% हो जाएगा, और ये 10% खाली टैक्स का करना है। If you go to section 112 or 207, this pre-deposit is 10% of the tax amount. It is not 10% of the tax, interest or penalty. It is only of the tax amount. Second question comes is how it has to be paid. Can this be paid through electronic credit ledger also, or it is to be paid through cash ledger only? Now the situation is crystal clear, and you can pay this pre-deposit through credit ledger also. There is no bar on that. There is no issue with the statute book also. This additional 10% can be very well paid with the amount available in the electronic credit ledger.
जीएसटी 80 की जो अपील है, बाय डिफॉल्ट इन ऑलमोस्ट ऑल केसेस ये इलेक्ट्रॉनिक ही फाइल होनी है। एक्सेप्शनल सिचुएशंस में, एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में मैनुअल फाइलिंग का ऑप्शन एक्सरसाइज किया जा सकता है। लेकिन अगर आप स्कीम पढ़ें, इनका यूजर जो अपील फाइलिंग का इन्होंने एक यूजर गाइड दिया है उसको पढ़ें, तो अपील्स आर टू बी फाइल्ड कंप्लीटली इलेक्ट्रॉनिकली ऑन जीएसटी 80 पोर्टल। अब प्रोफेशनल का क्वेश्चन आता है कि मेरा ऑर्डर इन अपील पोर्टल पर अपलोड ही नहीं हुआ है। जब जीएसटी 80 का जो इकोसिस्टम बोलता है कि अगर आपका पोर्टल पर अपलोड भी नहीं हुआ तो भी आप जीएसटी 80 पर इलेक्ट्रॉनिक अपील फाइल करेंगे, और उस पर्टिकुलर ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी आप अटैच करेंगे एट द टाइम ऑफ फाइलिंग अपील एट द जीएसटी 80 पोर्टल। और जिन केसेस में पोर्टल पर अवेलेबल है मेरा ऑर्डर इन अपील, वहां पर 100% आपकी अपील इलेक्ट्रॉनिक फाइल होगी। कैसे फाइल होगी, वी विल अंडरस्टैंड दैट। अब तीसरा सवाल प्रोफेशनल का आता है कि गवर्नमेंट की फीस क्या है जीएसटी 80 पोर्टल पर अपील फाइल करने की। पहली बात यह है कि ये जो फी है, ये बेसिकली, ये जो फीस है ये बेसिकली ट्राइब्यूनल के जो रूल्स हैं उनके अंडर लगाई गई है। ये जो फी है, ये जो ट्राइब्यूनल के रूल्स हैं उनके अंडर लगाई गई है। और ये जो फी है, इसमें कंफ्यूजन ये थी कि पहली तो फीस कितनी जमा होगी, और फीस के कंपोनेंट्स क्या कोई सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी होंगे। तो अगर हम समझें, अगर आप स्क्रीन पे देखें, तो फी है इज 1% ऑफ द टैक्स डिमांड इन डिस्प्यूट एंड सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ ₹25,000 एंड मिनिमम ऑफ ₹5,000। 1% डिमांड का है, आपका जितना टैक्स है उसका 1% है, लेकिन मैक्सिमम अमाउंट है 25,000। मैक्सिमम अमाउंट है 25,000 और मिनिमम अमाउंट है 5,000। जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि क्या 25 सीजीएसटी, 25 एसजीएसटी ऐसे जमा होना है। अगर हम पोर्टल का इकोसिस्टम समझें, अगर जीएसटी 80 के एनवायरमेंट को समझें, तो ये 25,000 में कोई सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं है। 25,000 इटसेल्फ इज अ फी। इसके अंदर 25 और 25 50,000 फीस नहीं है। अगर जब आप अपील ड्राफ्ट करेंगे, जब उसको फाइल करने जाएंगे, तो 25,000 की वो आपसे फी मांगेगा अगर आपका ऑर्डर हायर साइड पे है, बड़ा ऑर्डर है। अगर आपका छोटा ऑर्डर है तो आपको 5,000 की फीस डिमांड करेगी। इन आवर ओपिनियन दिस फी is consolidated 25,000 for a particular order in appeal. इसमें सीजीएसटी एचजीएसटी का कोई स्ट्रक्चर नहीं है, सीजीएसटी एचजीएसटी का कोई शेयर नहीं है। दिस बेसिकली अमाउंट इज कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट टू मैनेज द जीएसटी 80 पोर्टल एटसेट्रा। ये कंसोलिडेटेड 25,000 रुपए की फीस है और मिनिमम 5,000 की फीस है। लेकिन अगर आपका कोई ऑर्डर जिसमें पेनल्टी एटसेट्रा है, तो इट विल बी 5,000 रुपीज। इट विल बी 5,000 रुपीज। अगर टैक्स इन्वॉल्व नहीं है तो इट विल बी 5,000 रुपीज। पेमेंट कैन बी मेड आइदर थ्रू, all the modes of payment are given. We will see on the portal, all the modes of payment are available in the GST 80 portal. You can pay through Bharat Codes also. You can pay through UPI. You can pay through net banking, credit card, etc. All the options are available for paying the fee at the GST 80 portal. So before you accept any assignment for this GST 80 appeal, be clear, be concise with your client. This is a statutory fee which will be charged by the GST 80, and you have to charge your professional fees in addition to this fees. Check the order in appeal, check the quantum, tell him in advance that this is the appeal, this is the amount which will be paid to the GST 80 portal, this is the government fees. Sometimes there is a confusion and clients sometimes disagree to that, or there is some dispute to that. So let me clarify that you have to charge this fees in addition to your professional fees at the time of filing GST 80 appeal.
There are other fees also. Suppose you file a inspection of record, you have to pay 5,000 rupees. You file interlocutory application, you have to pay 5,000 rupees. If you file appeal itself, then we have discussed that 1% minimum 5,000, maximum 25,000. If you file any other application which is not mentioned in above list, then it will be again 5,000 rupees. And if you obtain any certified copy, you have to pay rupees 5 per page for obtaining the certified copy from the GST registry. So friends, be mindful of this, that in GST, the fees as compared to the IT is little on the higher side. The fee of for GST is little on the higher side as if we compare to the income tax appellate tribunal's practice. So many of you may be doing the IT practice at IT. So the fees for GST is little higher if we compare to the IT side. So be mindful of that. The fees we have to keep in mind at the time of accepting any assignment. Whereas now we are coming to the most important aspect, or you can say the summary, that suppose I want to start I get a assignment for filing GST 80 appeal for my client. What documents I have to draft for that? Which documents I will draft first, then I will move to the GST 80 portal. The first and the foremost condition is that we have to read word by word the order in appeal, the order in original, and the show cause notice. The reply filed at the time of adjudication and also at the time of filing first appeal. The most and the foremost task is that I have to be thorough with the facts of the case for which I am going to file appeal at GST 80. The first document I have to draft is the brief issues of the case under dispute, जिसको synopsis भी बोलते हैं. मुझे synopsis 2 pager 3 pager तैयार करने हैं, so that tomorrow when my case is heard by the bench, they can understand my case in a couple of minutes. They may not be required to read the entire paper book, or you can say they may not be required to entire detailed facts which are given in 20, 30, 40 pages. I have to present clear and concise synopsis of the case so that the bench, the honorable bench, can understand what is the issue due to which I am before the honorable bench. What are the facts of the case? Brief facts of the case. So first thing, after reading the judgment, after making your notes from the OIA, OIO, and the CN, you have to draft a clear facts of the case in the form of synopsis. This is the first thing. Synopsis is not the replacement for the detailed statement of facts. Synopsis are generally filed for the ease of honorable bench, so that my honorable bench can understand and the respondent also can understand the issue in the appeal. After that, I have to draft a detailed statement of facts. What are the facts of my case? Sometimes we only focus on the legal issues in a particular OIA. But as a practice, we have to be thorough with my facts also. I have to be thorough with the facts of the case, that these are my facts of the case. This is the amount of demand. The order has been passed by so and so. These were the replies. These were the documents filed by at the time of first appeal or at the time of adjudication. So secondly, I have to draft a detailed statement of facts. And to the attention of all the members, we have been reading this and hearing this from a long time, that the tribunal is the last fact-finding authority. GST 80 is the last fact-finding authority, and after that, I will be heard on the questions of law before Honorable High Court. I have to bring out all the facts on record before Honorable Tribunal. Try to develop that we need to bring all the facts at the time of adjudication. If we miss anything, then at first appeal. And that this is the last stage where I can put my facts on record. So try to be very mindful that
I need not to spare any facts due to which I may lose the case. We have to bring all the facts on record so that we can win the case on the basis of factual aspects. Then there has to be a grounds of appeal. The grounds of appeal can be divided into two parts. I am challenging the order on the facts also. I am challenging order on the legal aspects also. Or you can say the question of law. I have to rebut the facts also. कि मेरा जो order in appeal है, that is due to the mismatch. But practically, there is no mismatch. So this is a factual argument. We can submit the copy of GSTR 2A, 2B, table 8A, the copies of invoices, etc. We can submit the copy of circular also, the copy of that certificate also as per 183/15. So we have to make grounds of appeal in a very detailed way. We have to cover almost all the grounds. Try to capture almost all the grounds, and as a practical suggestion, sometimes what we do in IT/AT that we take some generic grounds also. Sometimes we take some generic grounds also, wherein if by mistake or by omission I skip any of the grounds of appeal, I may get shield of my generic ground. Sometimes we say that the order is like the proper officer has no authority, etc. So once we write that the proper officer has no jurisdiction to decide this case, then we have covered almost the jurisdictional aspect of that particular controversy. अब 122 के केस में आपने देखा होगा सर्कुलर 254 ने असाइनमेंट ऑफ पावर किया. 254 आने के बाद हमें पता लगा कि प्रॉपर ऑफिसर्स का असाइनमेंट ही नहीं हुआ था टू डिसाइड द पेनल्टी अंडर सेक्शन 122. तो अगर हमने जेनेरिक ग्राउंड लिया होगा कि द ऑनरेबल learned additional commissioner has no authority to decide this particular case, so that ground is covered in my generic grounds. And now I can take a specific ground that it is apparent on the face of record that he has been assigned by so and so circular. The assignment of power has been done by circular number 254, and he has got the authority now. And at the time of making decision, he had no authority to decide the case. So these three documents are my, you can say, the heart of my GST appeal. The facts, the grounds. The fourth, for the convenience of my honorable bench, we have to give them list of dates also, sequence of events like when the SCN was issued, when the intimation was issued, when the PH was scheduled, PH was attended or not attended, PH was given or not given, when was the hearing took place, or when was the order in original was passed, when did I file the appeal. So I give to you a list of dates in sequence so that I can make arguments accordingly before honorable bench. The prayer is again very, very important aspect of my appeal. I have to spell out the prayers which I am making before honorable authority, honorable tribunal. I have to be concise, be specific with my prayers. I have to give the prayers which I am seeking. The prayers for remand back, the prayers for the quashing of the order, prayers for the stay also. So these prayers I have to include in my prayer clause. One important point, recently Honorable Bombay High Court has decided a matter wherein Honorable Bombay High Court has categorically held that the tribunals will be having the power to stay the orders of first appellate authority. And what was the litigation before Honorable Bombay High Court was that the petitioner was saying that GST has no power to grant interim stay on the order passed by the first appellate authority. Therefore, we have filed an application under Article 226 before Honorable Bombay High Court. So Bombay High Court discussed the entire
provisions of the law, discussed the scheme of section 112, and decided that if the tribunal has the power to quash the order, they have the extreme power to set aside the order of first appellate authority. How can we say that the tribunal has no power to grant interim stay on that order? So the Honorable Bombay High Court clearly said that file an application before GST to get interim stay on that particular order. So we have to be mindful that suppose if we normally, if we seek a stay, we go to the Honorable Jurisdictional High Court under Article 226 to get stay on a particular order. That is the serious jurisdictional issues. Now, Bombay High Court has settled that stay can be granted by the tribunal also. You can file an application for the stay. So the next question put up before the Honorable Bench was that there is no ecosystem in GST to file stay applications. So Honorable Court has directed the concerned authorities to develop a scheme that you have to facilitate the filing of stay applications in the GST portal. As of now, there is no ecosystem to file stay applications. The other aspect is that the other important document is we have to prepare the index of appeal with relevant annexures. We are already following this practice of making index. You can say the consolidated document is called the paper book. But GST is following the practices which are followed at High Court level. As of now, what we have understood is that Honorable GST is trying to follow a practice which are prevalent at jurisdictional high courts, so the Delhi High Court. You can say almost all high courts. We are sitting in Delhi, so I'm saying that they are following the practice of that we are following at Delhi High Court, that there has to be an index first. After index, we have to give all the documents like my APL 05, my brief facts of the case, detailed facts of the case, detailed grounds of appeal, my prayer, and relevant annexures. The relevant annexures which I am relying upon at the time of filing my appeal or at the time of hearing, I will rely upon. I have to file all the documents in the form of a paper book at the GST portal. And friends, there has to be a proper pagination of the entire paper book, and you have to develop a practice of putting bookmarks on that particular index of the paper book. Many of us may be following that practice. If we are not doing so, we have to develop a practice that we have to create a paper book with index, and we have to bookmark also. Bookmark may be new to few of us, but it is already followed at High Court that once my PDF is opened by the Honorable GST bench, they have some systems in front of both the members, like technical member and the judicial member. If I'm saying that, my lords, I'm relying on annexure P2, P3, please come to annexure P3 at page number so and so. Then the person who is assisting honorable member or honorable judge of the bench, click on P3. The moment he clicks on P3, the P3 will get opened on his screen. So this is the benefit, or you can say the ease of that bookmarking, which will assist the honorable bench in a better way. So they can come to P3. Now I'm relying on P7, then they will again go to P7. If I have not done bookmarking, they have to scroll the pages on a PDF. They have to scroll down, scroll up, scroll down, scroll up. Again, I'm relying on annexure P19, and it is after 100 pages. Then again, he has to scroll down to 19, and it will take a lot of time. To save the time of honorable bench and to assist the honorable bench in a better way, I have to be present my paper book with bookmarking and proper pagination. The next set of protocols followed in GST is that the paper will be A4 size paper. It will not be a legal paper. Be careful of that. The font will be Times New Roman. You have to keep Times New Roman.
The size of the font will be 12. There has to be double spacing. If you go to the Word file, you have to keep a double space between the letters. And recently, Honorable Delhi High Court has issued directions while filing writ petitions that the Honorable Judge Justice Sambre was reading a petition and he was saying that my eyes will get lost because there was no double spacing in the petition. And after, on the next day, he issued directions that all the petitions will be having Times New Roman 14 font and double space. In double space, they can easily read my document on the screen. They will have less stress on their eyes. So at the time of filing drafting my GST petitions, GST appeals, Times New Roman, font size 12, there has to be double spacing horizontally. Or there has to be printing on the one side of the paper. Both sides are not required. So there is some conflict in this, but as per the directions of GST 80, when you file the appeal, they are saying that one side of the paper shall be used. Few more, you can say, few more instructions, or you can say few more checklists. We have to upload self-certified copies of OIO and OIA. Self-certified in the sense that the signatures of the client, but later on they issued a direction that if it is generated by GSTN portal, that this self-certification is not required. You can upload that copy to the portal. Appeal has to be drafted in English, no vernacular language required. And the most important aspect is that suppose you are relying on an order in original or order in appeal, which is written in Hindi. In case of Uttar Pradesh, in case of Gujarat, in some states, they are following the practice of typing orders in their vernacular language. In Gujarat, in Uttar Pradesh, they type order in Hindi. In Gujarat, in Gujarati, in Uttar Pradesh, they type in Hindi. So what I have to do now, I have to get that order converted from Hindi to English. And I have to file the translated document before GST 80. I have to upload that translated document before GST 80. And the most important aspect is that I have to enclose an affidavit also that this translation has been done accurately. I have not manipulated anything which is there in the original order, OIA or OIO. So you have to, at the time of filing appeals for the particular states like Uttar Pradesh or Gujarat, etc., or some are saying that Punjab also do that, you have to be careful, mindful that you have to file the translated copy with affidavit of the director or proprietor, etc., that this has to be accurately translated. Then again, scanning. Scanning has to be done with 300 DPI. There has to be color scanning. The page has to be color. You have to make color scanning of the document. In one PDF maximum, there can be 100 pages, and the size of one PDF can be maximum 20 MB. These are the practices, friends, we have to follow in times to come. But for the ease of members, recently they have, you can say, issued a one-time relaxation for initial 6 months. And let's read this also, just to give a brief to you, that they are saying that the registry shall keep a lenient view during scrutiny of appeal documents and raise defects of substances only, rather than for the defect of form, that is defects of not affecting the merits of the case shall not be raised for an initial period of 6 months from the date of issuance of this order. I have told you many complex things, from bookmarking to the translation, etc., everything. But for the first 6 months, they are saying that they will not procedural issues while making scrutiny of your appeal document. The moment I file appeal on the GST 80 portal, the registry will start scrutinizing my appeal. But at the time of scrutinizing, they are instructed that in the initial 6 months, you are not required to raise some procedural queries. Like suppose there is no double spacing, they will excuse us. There is no Times New Roman, they will excuse us. There is some difficulty in pages, say, I have scanned
120 pages in one PDF file, they will excuse us. The size of PDF is set 21 MB. It is required as 20 MB. They will excuse us. But the issues which will affect the merits of the case will not be excused. Like you have to pay pre-deposit. That will not be excused. You have to pay that pre-deposit. That will not be excused. But you can say the procedural issues, the list is not given, but they are saying they have to take lenient view on these procedural issues. They will be excused for initial 6 months. So try to follow the best practices. Try to develop the best practices so that in times to come, we may be more presentable before honorable bench, and the presentation matters, friends. The presentation at the bench matters. The chances of winning becomes higher. The good is the presentation, chances are also good. So now I'm trying to give you a flavor of the GST portal, and I'm going to the GST portal. Friends, this is the, you can say the interface of the GST portal. And here you can say there are login option. Login is available for the, suppose we have 10 appeals in our office. So we have to create individual login for each appeal, each client. Being a professional, I have to create my own login. I will show that also. But appeal has to be filed from the portal of the client. The user ID and the password created for the client. As a professional, I have to create my login, but I cannot file appeal from that particular login. That particular login will be used after the appeal has been filed, and I have been selected as an attorney for that. Suppose I'm filing an appeal for ABC Limited, and ABC Limited has selected in drop-down CA so-and-so as their authorized representative, and the appeal is completely filed. So that appeal will start reflecting on my portal as a professional, that so-and-so client has filed appeal, and that appeal will be reflected on my portal. Once that appeal is filed, and suppose there is some scrutiny error issued by the registry, that will also be reflected to me. There is some document filed by the respondents, that will also be reflected to me, because I have been appointed as an authorized representative of that particular appeal. So first, those who have not registered, they have to register here. You can register for filing appeal of the client. You have to select taxpayer. To register yourself, you have to select authorized representative. To file up, to create you as a CA or as an advocate, you have to select authorized oblique legal representative. And you have to fill these details, like keep your iCard ready at the time of creating your login. They will ask the membership number. They will ask certain documents also. And these mobile number and email ID, by providing these, you can create your ID. And there is some issue coming at the time of creating some, validating some OTPs, etc. So that difficulty coming to everybody. So that will be resolved in times to come by the GST, but that difficulty is coming to almost all the people who are trying to register at GST portal. So now I'm trying to log in as a taxpayer for one of the clients. विनोद जी आपकी आवाज Just a minute. I'm doing. Okay. So here you can say that we have logged in into the GST 80 portal of one of the petitioner, one of the litigant.
There is one draft case in the, here you can say these details they are asking, basically basic details of the client. Once you go to the basic detail, they will ask that the select the act, section 112, case type, it's an appeal. Does the appeal involve an issue over which only the principal has jurisdiction? Certain issues, I have selected no. Jurisdiction of the appellant, that where you are, where is your jurisdiction, center or state? You have to select this zone in the state, like we have selected Delhi here. Then the jurisdiction of the appellate authority is also required to be selected. Here you can see that we have selected appeal 2. This has been auto-populated by the system. On the basis of OIA, appeal to jurisdiction CGST Delhi West and Delhi South has been selected. The details of clients will get opened here. Basic details. The appellant's detail, like the grounds of appeal, the brief issues of the case under dispute, the prayer. So normally we write that it is all mentioned in the paper book. It is all mentioned separately in the annexes or in the paper book. But these documents you have to draft in advance. They ask for the category of the case, that my case is related to the inadmissibility of input tax credit. It was a 74 show cause notice OIA. So accordingly, we have selected that. And then what are the issues as per the first appellate authority, as per the proper officer, as per the first appellate authority, and as per the stand before tribunal, what we are taking stand before the tribunal. And then it is asking about the basic details of the client. Now we are coming to the upload documents. So here you can see on the screen that it is giving a like some pop-up of attention that these mandatory points keep in mind at the time of uploading the appeal, that only PDF files can be uploaded, no JPG, no etc., no other mode will be accepted. File for uploading should be scanned in grayscale with 300 DPI. I already told that 300 DPI is must at the time of scanning. You have to select 300 DPI. Here they are saying that you have to scan in grayscale, but at the time of filing appeal, they were saying in the directions, they were saying it has to be color copy. So there is some conflict in that, whether color copy or grayscale. Number of pages in a particular file should not be more than 100 pages. The size of the PDF should not exceed 20 MB. These are the directions the attention they are putting at the time of uploading the documents. But the 6 months leniency view is applicable on this. The procedural issue will be taken care by the registry at the time of making scrutiny. And this is basically the ready appeal. Then it gets the option of, it gives option to file appeal, that you can file appeal. Once I click on that document, it will take me to the payments aspect, that I have to make the payment of 25,000 rupees, and the appeal will be uploaded. So the important point is that once this appeal is filed, now we can see the professionals login, how it looks like, how we have to.
So this is, I have logged into my login, that this is my login. Since none of the appeal is assigned to me, it is showing 0. The moment somebody files appeal against me, then it will be reflected here that I can upload some documents also. I can define if any query is raised by the registry, then I can reply to that also. I can file to the additional documents also. I can respond to the respondents also. What they have filed, I can see that. I can communicate with the portal. So this is my portal, the portal of the professional. But in this portal, I cannot file any appeal. I can, after filing the appeal, I can take the follow-up. I can file additional documents. So this is also important. You have to create this before you move ahead with the filing of GST appeal. So friends, this was the overview of the GST portal and the legal aspects. So Sumitji, we can now take some questions if there is any. The presentation part is over from my side. Am I audible, Sumitji? Am I audible? Is there anyone from Sumitji office? Or should we start taking queries? हाँ जी विनोद जी। हाँ सर, हाँ सर। प्रेजेंटेशन हो गया, अभी वी कैन टेक सम। विनोद जी कैन यू रिपीट, वो म्यूट था तो मुझे सुनाई नहीं दिया। हाँ जी, हाँ जी, बताइए सर। नाउ प्रेजेंटेशन पार्ट इज ओवर, सुमित जी, वी कैन टेक अप द Yes, क्वेश्चन। yes, 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 yes. Perfect, perfect. So many queries are there in chat box. Just a minute. Will you, आप देखें मैं रिपीट करूं? जैसे जैसे कन्वीनियंट है, हाँ। अगर आप मुझे। अश्विन ठक्कर जी की क्वेरी है सर, 5:07 पे। यहाँ से शुरू कर लेते हैं सर। आप जी गो जी, थ्रू करते जाएंगे तो बेटर रहेगा, आसान हो जाएगा। डन 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 सर, मैं भी देख रहा हूँ। जहां अश्वनी जी की क्वेरी है, सर फाइलिंग अपील विद जीएसटी 80 आस्किंग टू सबमिट अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑर्डर is required in case of order received and passed online, or in case of impugned order received in hard copy only. Please request to provide your views. इसमें इन्होंने लिख दिया, अश्वनी जी, इसमें लिख दिया, अगर आप एडवाइजरी देखेंगे ना, तो इसमें लिख दिया। आज भी एक 10 तारीख की एक एडवाइजरी और आई है, उसमें भी उन्होंने लिखा है। ये देखो अभी, इफ योर स्क्रीन इज विजिबल टू यू, एट बॉटम दे हैव सेड इट इज क्लैरिफाइड। ये आपका सर्कुलर चला गया अभी जो आया था। हाँ, जस्ट अ मिनट। हाँ। On the bottom you can say further it is clarified the document generated digitally through GSTN are not required to be certified, whereas scanned copies of the physical documents attached with the annual शेल बी साइन। appeal shall be signed. तो इसमें आपका आंसर हो गया। और आज भी एक अभी सर्कुलेट हुआ है, एक और एडवाइजरी आई है जीएसटी 80 की तरफ से, रजिस्ट्री की तरफ से, तो वी हैव टू रीड दैट ऑल्सो। बाकी इन माई व्यू, अगर वो जीएसटीएन पोर्टल से जनरेट हुए हैं, उस पर ऑलरेडी साइन होते हैं ऑफिसर के। इट इज डिजिटली साइंड बाय द ऑफिसर। आप उसको सबमिट कर सकते हैं, देयर इज नो इशू टू दैट। उस पर मेरे हिसाब से रजिस्ट्री अब नहीं लगाएगी क्वेरी। विनोद जी आई थिंक कई क्वेरी सॉल्व हो गई होंगी, क्योंकि स्टार्टिंग वाली क्वेरीज ना आंसर हो गई होंगी, तो लास्ट से ले I'm लेते facing हैं। an issue where the preview is not displaying, showing blank display, white display after clicking the checklist button on the database dashboard, please. इसके लिए आप मनु सर, आप ना एक बार आपको जीएसटी 80 से कनेक्ट करना पड़ेगा। ये टेक्निकल इशू है, प्योरली व्हाइट स्क्रीन वाला, कुछ लोगों को आया है, मैंने भी सुना है। तो यू कैन टॉक टू द हेल्पलाइन नंबर, दे विल रिजॉल्व दिस। अदरवाइज अपील हो रही है, ऐसा कोई व्हाइट स्क्रीन आ रही नहीं है। आर ऑल स्टेट ब्रांचेस ऑफ जीएसटी फंक्शनल? सर प्रिंसिपल बेंच के अलावा अपॉइंटमेंट अश्विनी जी सब जगह हो गए हैं। टेक्निकल मेंबर स्टेट का इशू है, काफी स्टेट्स ने अपॉइंट नहीं किया है, लेकिन जुडिशियल मेंबर और जुडिशियल मेंबर प्लस टेक्निकल मेंबर सेंटर ऑलमोस्ट अपॉइंट हो गए हैं सारे, और सबको एलोकेशन भी हो गया, आपने देखा होगा ऑर्डर। लेकिन अगर हम बात करें हियरिंग की, तो हियरिंग ऑलमोस्ट कहीं भी स्टार्ट नहीं हुई है। देहरादून से कुछ न्यूज आई थी कि उन्होंने कुछ प्रेस में रिलीज किया था, दे आर स्टार्टिंग इट, बट अभी
ऐसा कुछ आया नहीं है कि फिजिकली उनके ऑफिसेस कहाँ हैं। अब दिल्ली में हमने सुनने में आ रहा है कि जो WTO का है, WTC में है, वहां पर कुछ अरेंजमेंट होगा, इनकी बनेगी बेंच, लेकिन ऑफिशियली कुछ भी आउट नहीं है कि कैसे स्टार्ट करेंगे, कब से हाइब्रिड करेंगे, फिजिकल करेंगे। दैट इज नॉट क्लियर एज ऑफ नाउ। प्रिंसिपल बेंच इज फंक्शनिंग। जो प्रिंसिपल बेंच है उनका कनॉट प्लेस में ऑफिस है, LIC जीवन भारती बिल्डिंग में, दे आर फंक्शनिंग। आफ्टर 6 month टाइमलाइन, व्हाट विल बी द रेमेडी विद अपील इन GST 80? अश्विनी जी, ये जो जो टाइमलाइन है इसमें डाइवर्जेंट व्यूज हैं कोर्ट्स के भी। अगर आप दिल्ली हाई कोर्ट की बात करें तो वो बोलते हैं कि ये जो स्टैट्यूट में टाइम लिमिट है, ये बड़ी रिजिड टाइम लिमिट है, इसमें इवन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी इसको कॉन्डोन नहीं कर सकते। तो इस 3+3 का जो 6 months का जो डेडलाइन है, इसको बड़ा स्ट्रिक्टली और बड़े डिसिप्लिन के साथ हमें फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इसमें कोर्ट्स के डिफरेंट व्यू आ रहे हैं और एडवर्स व्यू भी काफी सारे कोर्ट्स के हैं। अगर हम बात करें कलकत्ता हाई कोर्ट की तो हमारे फेवर में है, दिल्ली हाई कोर्ट हमारे अगेंस्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट हमारे अगेंस्ट है, और इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी एक दो केसेस के अंदर इसको एंटरटेन नहीं किया है। दे आर सेइंग कि लिमिटेशन नहीं लगता, स्टैट्यूट में जो टाइम लिमिट्स हैं उनको हमें स्ट्रिक्टली एडहर करना पड़ेगा। इफ रिकवरी हैज नॉट बीन, राजेश जी का सवाल है, इफ रिकवरी हैज नॉट बीन स्टार्टेड बट 10% पेमेंट इज पेंडिंग, वेदर ट्राइब्यूनल अपील कैन बी फाइल्ड अप टू 30/6? राजेश जी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, जल्दी से जल्दी कर दीजिए फिर, क्योंकि कई केसेस में रिकवरी स्टार्ट हो गई है, उनको डिफिकल्टी आ रही है। वो क्या करते हैं, बैंक अकाउंट से पूरा पैसा निकाल लेते हैं, फिर आपको हाईकोर्ट जाना पड़ेगा, अननेसेसरी लिटिगेशन होगा। तो बेटर है फटाफट अपील फाइल कर दीजिए, 10% प्री डिपॉजिट करके उस पर स्टे ले लीजिए। इंग्लिश वर्जन इज एग्जाम्प्ट फॉर टाइमिंग और नोट? इंग्लिश वर्जन मुझे ऐसा लगता है कि आपको इसमें रिस्क नहीं लेना चाहिए, ये उस 6 months की लीनियंसी में नहीं आएगा। क्योंकि क्या होगा कि सपोज आपका केस गुजरात में है और गुजराती में ऑर्डर है, और मेंबर गुजरात में जो अपॉइंट हुआ है वो दिल्ली से है या फिर वो उत्तर प्रदेश से, ही डज नॉट अंडरस्टैंड गुजराती, so he may not decide your appeal because the order is typed in Gujarati and he may not understand Gujarati. Therefore, आपको उसमें रिस्क ना लेते हुए गुजराती को इंग्लिश में कन्वर्ट करा के एक ट्रांसलेशन का एफिडेविट जरूर लगाना चाहिए। हाउ टू एनरोल अवर नेम इन द एयर लिस्ट ऑन द पोर्टल? सर, आपको अगर आप स्क्रीन पे देखें, इफ यू आर अवेलेबल, प्रीति मित्तल जी, अच्छा प्रीति मित्तल जी का नहीं, इंग्लिश, अच्छा आयुष बांका जी का क्वेश्चन था इंग्लिश वाला। प्रीति मित्तल जी का क्वेश्चन, पेपर बुक इज टू बी फाइल्ड बाई विद फाइलिंग ऑफ अपील ऑनलाइन? हाँ बिल्कुल प्रीति जी, आपको PDF क्रिएट करनी है पूरी पेपर बुक की बुक मार्किंग के साथ, एज अ बेस्ट प्रैक्टिस। अभी आप लीनियंसी लेनी है आपको 6 महीने की तो ले सकते हो, एज ए बेस्ट प्रैक्टिस आपको PDF फाइल करनी है प्रॉपर, जैसे हाईकोर्ट में फाइल होती है। इंडेक्स होगा, बुक मार्किंग होगी, सारे एनेक्सर्स होंगे, आपका मेमो ऑफ द अपील होगा, सब कुछ होगा, और आपको वो अपलोड भी करना है GST 80 पोर्टल पर। और जो फाइल आप ऑनलाइन अपलोड करोगे, दैट हैज टू बी अ मिरर फाइल एट द टाइम ऑफ फाइलिंग फिजिकल फाइल। आपकी फिजिकल फाइल और ऑनलाइन अपलोडेड फाइल हैज टू बी मिरर, उसमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए। आपने ऑनलाइन फाइल करी है 100 पेजेस, फिजिकली फाइल कर रहे हो 110 पेजेस, तो दैट विल बी अ डिफरेंस। वो रजिस्ट्री आपको स्क्रूटनी में एरर इशू करेगी। हाउ टू एनरोल अवर नेम इन द एयर लिस्ट ऑन द पोर्टल? मैम उस पे प्रीति जी, आप जब लॉग इन करोगे ना, लॉग इन पे आपको ऑप्शन आ रहा है। Once you log into the GST portal, if you are available and with us, you can see the screen. There is option of register. Register में आप जाके, तो फोर्थ ऑप्शन है ऑथराइज्ड एडवोकेट और लीगल रिप्रेजेंटेटिव, यहाँ पे आप जाके रजिस्टर कर दीजिए। आप अपनी पूरी डिटेल्स अपने साथ रखिए, लाइक आपका जो मेंबरशिप नंबर है, मेंबरशिप कार्ड की फोटो भी अपलोड आपको करनी पड़ेगी। पुरुषोत्तम जी, आई हैव अ क्वेश्चन, उन्होंने क्वेश्चन नहीं लिखा अभी। हरमीत सिंह जी कह रहे हैं, सर व्हाट शुड बी द मिनिमम अमाउंट ऑफ डिमांड टू फाइल अपील? 50,000 से ऊपर आप फाइल कर सकते हो। 50,000 का एक अमाउंट है जिसके नीचे वो मना कर सकते हैं, आप अपील फाइल नहीं करोगे, उससे ऊपर आप फाइल कर सकते हो। पुरुषोत्तम जी का एक और क्वेरी है, वेदर डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ प्री डिपॉजिट ऑफ 10% हैज टू बी पेड थ्रू GST पोर्टल इटसेल्फ और इट कैन बी पेड डायरेक्टली थ्रू GSTAT? इन आवर केस व्हेन वी वेंट टू डिस्प्यूटेड अमाउंट पेज on GST 80 website, it was not mentioned that non payment could be fetched from the GST portal. Since we didn't actually made the payment, do you want to proceed? गौतम जी, बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि आप 10% पेमेंट टुवर्ड्स डिमांड में जाके कर दीजिए, वो ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा और आपको फिर दोबारा प्री डिपॉजिट करने के लिए नहीं कहेगा।
आप 10% जो आपकी डिमांड क्रिएटेड है जीएसटीएन पोर्टल पे, जीएसटीएन और जीएसटी पोर्टल आपस में लिंक तो हैं, ये तो कंफर्म्ड है, बिल्कुल लिंक्ड है दोनों पोर्टल आपस में, और इंफॉर्मेशन फैच हो रही है। जब आप अपील फाइल करने जा रहे हैं उससे पहले 10% अगर आप उसमें से पे कर देते हैं तो आपको इशू नहीं आएगा, वो आपकी इस अपील को कंसीडर करेगा और आपको डिफरेंशियल अमाउंट नहीं मांगेगा। रवि जी का क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन, कुछ क्लाइंट्स की अपील भी फाइल नहीं हुई है, 2-3 ईयर्स हो गए हैं फर्स्ट ऑर्डर आने के बाद, कुछ मैं अपील की थी वो रिजेक्ट हो गई टाइम ज्यादा होने के बाद, इन केसेस में हम क्या करें? रवि जी, इन केसेस में आप अपील तो फाइल करी, तो आपके पास 30 जून का ऑप्शन है। जो आपकी लिमनी पे डिसमिस हुई हैं उसमें भी आप प्ली ले लीजिए कि आपको कम्युनिकेट लेट हुआ था। अभी आप अगर हैं हमारे साथ ऑनलाइन तो एक इलाहाबाद हाईकोर्ट का काफी अच्छा डिसीजन है बॉम्बिनो, आप बॉम्बिनो का डिसीजन पढ़िए एक बार, और उसमें कुछ कम्युनिकेशन को लेके काफी इंटरेस्टिंग और काफी आपके फेवर की बात हुई है। आप अगर आप लिमनी पे आपका केस डिसमिस हुआ है तो आप चांस जरूर लीजिए, आप अपील फाइल करिए जीएसटी में और आर्ग्यूमेंट्स करिए कि पोर्टल पर अगर डिपार्टमेंट ने कोई नोटिस अपलोड कर दिया, कोई ऑर्डर अपलोड कर लिया, तो वो इफेक्टिव कंस्ट्रक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है, ऐसा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है और हंड्रेड्स ऑफ रिट पिटिशन डिस्पोज ऑफ करी है कि सिर्फ अगर पोर्टल पे कोई डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ है तो वो कंस्ट्रक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है। डिपार्टमेंट को और भी मोड से उस कम्युनिकेशन को ट्राई करना चाहिए था, लाइक स्पीड पोस्ट कराते, उसके घर पे भेजते। सिर्फ आपने पोर्टल पर अपलोड कर दिया और आपने उसको कम्युनिकेशन मान लिया, ऐसा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि ये ठीक नहीं है, और इससे उन्होंने अपना डाइवर्जेंट व्यू दिया है। तो आप बॉम्बिनो का डिसीजन पढ़िए, इलाहाबाद हाईकोर्ट का काफी अच्छा डिसीजन है, उससे आपको हेल्प मिलेगी और आप अपील जरूर फाइल करिए। ये थी क्वेरी रवि जी की ना, रवि रवि भाषणी जी की। यस, रवि जी की क्वेरी के बाद। Manu Dhawan ji की query, I am facing an issue where the preview is not displaying, showing blank after checking the checklist but on the dashboard. Additionally, we are unable to preview the case detail after submission. ये इशू है मनु जी, इशू आ रहे हैं कुछ लोगों को, आ रहे हैं इशू। ये इसके लिए आपको जीएसटी की टेक्निकल टीम से कोऑर्डिनेट करके उसको रिजॉल्व कराना पड़ेगा। ये अभी पोर्टल इनिशियल स्टेज पे है, एनआईसी इसको डेवलप कर रही है, तो कुछ इश्यूज हैं, आप टेक्निकली बात करके इसको रिजॉल्व करा लीजिए। और एटलीस्ट अगर बाद में भी डिफिकल्टी आती है तो स्क्रीनशॉट अपने पास जरूर रखिए, ताकि आप कल को टाइम निकले तो आप डिले जब काउंट डाउन कराएंगे तो आप बोल सके बेंच को कि ड्यू टू टेक्निकल रीजन आपकी अपील फाइल नहीं हुई। राजेश जी है, इफ रिकवरी हैज नॉट yet started but 10% pending whether tribunal appeal can be filed, ये तो हो गया क्वेश्चन। पुरुषोत्तम सर, वी कैन गेट एनी सैंपल पेपर बुक, ये देखते हैं सैंपल पेपर बुक का कैसे होता है। इलाहाबाद केस नेम प्लीज प्लीज राइट हियर। इलाहाबाद का ना सुमित जी मैं आपको भेज लूंगा, एक बॉम्बिनो का डिसीजन है इलाहाबाद ठीक है। हाईकोर्ट का, ओके। वो आप सर्कुलेट कर देना, ठीक है। काफी अच्छा डिसीजन, हेल्प मिलेगी लोगों को। ओके। फर्स्ट अपील के बिना भी क्या जेस्टेट में जा सकते हैं? मेरे वाले केस में फर्स्ट अपील के बिना जेस्टेट में जाना शायद पॉसिबल नहीं, क्योंकि जो रास्ता है ना वो रास्ता यही है कि आप फर्स्ट अपील के बाद, फर्स्ट अपील के बिना भी आप, अगर आपका प्रॉपर ऑफिसर ने कोई ऑर्डर पास किया है तो डायरेक्टली हाई कोर्ट तो 226 में जा सकते हो, लेकिन डायरेक्ट जीएसटी नहीं जा सकते मेरे हिसाब से, क्योंकि जीएसटी में जाने के लिए आपके पास फर्स्ट अपील का ऑर्डर होना चाहिए। उनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिडिक्शन नहीं है जेस्टैट के पास, वो एक स्टैट्यूटरी, एक तरीके से स्टैट्यूट की क्रिएशन है जेस्टैट। डायरेक्ट आप जंप करके जीस्टैट पे नहीं जा सकते, आपको फर्स्ट अपील फिर उसके बाद जीस्टैट पे जाना पड़ेगा, दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग। इन आवर केस, नितिन जी का है, इन आवर केस ऑनरेबल हाई कोर्ट हैज सेट aside to CAT appeal, then CAT appeal have ordered on CAT to set aside to CIT appeal, and CIT appeal have ordered, but he has not uploaded on portal and given physically. How to tackle this issue before GST? In our case, Honorable High Court has set aside to CIT appeal, and then CIT appeal have ordered, but he has not uploaded on portal and given physically. How to tackle this issue before GST? आप इसकी अपील फाइल कर सकते हो नितिन जी, ये मैं समझ गया, उन्होंने APL 04 अपलोड नहीं किया, कई कई अपीलेट अथॉरिटी ये कर रही है, इशू मिस्टेक कर रही हैं, दे आर नॉट अपलोडिंग APL 04 एंड दी OIA। आप उनको रिक्वेस्ट भी कर लीजिए, अगर वो नहीं मानते तो आप अपनी अपील फाइल करिए, उसकी सर्टिफाइड कॉपी लगा के आप ये ऑर्डर अपलोड कर देना पोर्टल पे, वो एक्सेप्ट करेगा आपकी अपील। द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर इज इंक्लूडेड इन 3 months ऑफ टाइम। सर, डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर इज इंक्लूडेड इन 3 months ऑफ टाइम।
मतलब कहने का है कि जिस दिन आपको कम्युनिकेट हुआ उसके विद इन 3 मंथ्स आप अपील फाइल कर सकते हो। कम्युनिकेशन हुआ उसके विद इन 3 मंथ्स आप कर सकते हो। डिपार्टमेंट ने पोर्टल पर अपलोड कर दिया उसके 3 मंथ्स नहीं है। ऐसा जो डेलिबरेशन है वो ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया है। तो आपको ये रखना है कि आपको कब मिला उसके 3 महीने हैं। आप पोर्टल के ऊपर नजर रखिए अपनी, क्लाइंट को भी बता दीजिए अगर उसका कोई लिटिगेशन चल रहा है तो नजर रखिए पोर्टल पे, और जैसे ही कोई कम्युनिकेशन आए वो आपको इमीडिएटली बताए। So friends, Goa. Then we can go format of statement of facts and grounds of appeal. We will try how we can arrange this. हो गया सुमित जी, मुझे लग रहा है यस यस ऑलमोस्ट। यस, वंडरफुली कवरेज, यस। आई थिंक इससे रिलेटेड सारी क्वेरी जिसकी भी थी वी हैव कवर्ड। वी हैव ट्राइड टू कवर, बट स्टिल अगर कुछ है तो आई मीन वी हैव ग्रुप्स, वंडरफुल ग्रुप्स लाइक ऑडिट हेल्प डेस्क एटसेट्रा। Yes, yes, wonderful audit help desk group, which is solving the queries since 2021 and without posting any other messages. And thanks to our panelists, C. Rajesh Dolia ji, Nitin Mahajan ji, Anthony sir for joining, Hukum Singh sir, as always, ready. ये सर, आप एक बार स्टॉप शेयरिंग करेंगे सर? हाँ मैं कर रहा हूँ, एक सेकंड ना सर, मेरे को क्या हाँ, है, ये एक कुछ सेकंड। और हो गया। एंथनी सर, आर यू देयर? हाँ सुमित जी हूँ मैं। यस यस सर। सर, आप ही से रिक्वेस्ट करेंगे टू कंक्लूड द सेशन बाय फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स। चलिए, थैंक यू सो मच सुमित जी। और विनोद जी ने बड़े ही आसान शब्दों में और बिल्कुल सटीक जो पोर्टल को कैसे हैंडल करना है, यस। बेसिक चीज बताई है। वैसे इसमें काफी बहुत सारी चीजें हैं, टेक्निकल इश्यूज आएंगे, लेकिन उसके लिए कभी और सेशन रखा जा सकता है। बट अभी हम इतना भी कर लें तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मेरी एक छोटी सी और रिक्वेस्ट है मेंबर्स से कि थोड़ा सा ना ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 5, ऑर्डर 7 ऑफ सीपीसी जरूर पढ़ ले। बड़ा सिंपल सा है, तो आप पेपर बुक बनाना ना आसानी से सीख जाएंगे, चाहिए। क्योंकि वो बड़ा टेक्निकल इशू आता है। और देखिए, मेरे हमारे बीच में कई प्रैक्टिसिंग लॉयर भी हो सकते हैं, तो वो बुरा ना माने हमारी बात का, और हमारे मेंबर्स भी ना माने, क्योंकि वहां पे कोर्ट के अंदर जब होता है ना, तो लॉयर्स को इसी वजह से प्रेफरेंस मिलता है, क्योंकि हम हमारे केसेस ना तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाते। जैसे इंडेक्सिंग बोला, इवन पीडीएफ में भी इंडेक्सिंग प्रॉपरली हो कि वहां क्लिक करे, पेपर पेज नंबर, पेजिंग, वो टेक्निकल चीजें समझनी पड़ेगी। और फिजिकल डॉक्यूमेंट जो पेपर बुक बनाते हैं उसमें भी आप फ्लैग लगाइए, तरीके से इंडेक्सिंग कीजिए। फीस के चालान पे कर दिया है, ये हम सब चीज मानते हैं कि ऑनलाइन अवेलेबल है। जज कुछ नहीं देखेगा भाई, हमें सबमिट करना ही पड़ेगा। तो जज के ऊपर ना छोड़े, होने के बावजूद भी हम हमारे डॉक्यूमेंट हमारे साथ में रहें, और जब आर्ग्यूमेंट करें या प्रेजेंट करें, हियरिंग कराएं, तो उसी सीक्वेंस में चले जो आपने जज को सबमिट किया हुआ है। तो ये मेरी एक छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट है मेंबर्स के साथ। विद दिस वर्ड, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के सहयोग से हमारे ये वेबिनार सक्सेसफुल होते हैं, और आशा है कि सभी को इससे फायदा होता होगा। जरूर सर। हम आपसे निगेटिव फीडबैक की भी उम्मीद करते हैं। अगर कोई कमी रह जाती है तो आप हमें ज़रूर बताएं। हमारे सुमित भाई उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। इवन हमारे स्पीकर्स से भी आपको और कुछ और उम्मीद करते हैं, तो हम स्पेसिफिकली उनको बता दें, तो वो उसी तरीके से तैयारी करके आ जाएं। तो इन शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, आपने बहुत थैंक यू अच्छी सर, तरह से थैंक यू। हमको समझाया। और आगे भी इसी तरीके से हम और सेशन करते रहेंगे। ये जैसे सुमित थैंक यू जी ने सर। बताया कि हमारा जो कासा का ग्रुप है स्पेसिफिकली 2020-21 से हमने शुरू करा था, जिसमें हम आपस में एक दूसरे की क्वेरीज, छोटी हो बड़ी हो रिपीटेडली हो, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बहुत सारे मेंबर्स उसमें बेनिफिट ले रहे हैं। तो ये प्रभु का शुक्र है, आशीर्वाद है हम सभी पे। हम सब मिलके काम कर रहे हैं और अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। विद दिस वर्ड्स, थैंक यू वेरी मच आप सबों का पधारने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक थैंक यू यू, एंथनी थैंक सर, यू। थैंक यू विनोद सर, एंड थैंक यू थैंक टू यू ऑल सो मच, थैंक यू पार्टिसिपेंट। सो मच, थैंक थैंक यू, यू सर। थैंक यू।